मैं हूं आमिर अब्बास। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले तमाम टेस्टों के लिए बहुत बहुत अहम है। ये वो सवाल आते हैं जो कंप्यूटर के बेसिक और बार बार आने वाले तमाम सवाल को डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जंकी मेल इज़ आल्सो कॉल्ड, राइट आंसर स्पैम। Question number 27, example of non-numeric data is dash, इसका right answer है employee address। Question number 28, when a file is saved for the first time, इसका जो right answer है it must be given a name to identify it। Question number 29, what does DMA stand for, DMA किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, इसका right answer है direct memory access। Question number 30, which of the following is the storage device dash, इसका right answer है tape, hard disk, floppy disk। Question number 31, ASIII stand for, इसका right answer है American Standard Code for Information Interchange। Question number 32, which of the following is not antivirus software, इसका राइट आंसर है ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 34, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C, द राइट आंसर है M. Ritchie। क्वेश्चन नंबर 35, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC डैश, इसका राइट आंसर है J. Presper, Eckert and John W. Mauchly। Question number 36, modern computers are very reliable but they are not dash infallible। Question number 37, what is meant by the dedicated computer, इसका right answer है which is assigned one and only one task। Question number 38, DOS stand for, इसका राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इसका राइट आंसर है सटिया नडेला। क्वेश्चन नंबर 40, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41, 1 बाइट इज इक्वल टू डैश 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 42, BIOS stand for, इसका राइट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43, फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है डेनिस रिची। क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, इसका राइट आंसर है एंटर। क्वेश्चन नंबर 44, dash is the functional key to display save as box, इसका राइट आंसर है F12। क्वेश्चन नंबर 46, A dash the is a microprocessor based computing device, इसका राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 47, what kind of memory is both static and non volatile, इसका राइट आंसर है ROM। Question number 48, what is the other name of programming chip, इसका राइट आंसर है ROM। Question number 49, ALU and control unit jointly known as dash, इसका राइट आंसर है CPU, Central Processing Unit। Question number 50, RAM is an example of primary memory, random access memory is the example of primary memory। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।